भारत के तिरंगे झंडे को आसमान की ऊंचाइयों में लेके गया इसरो का चंद्रयान 3। भारत के तिरंगे झंडे को आसमान की ऊंचाइयों में लेके गया इसरो का चंद्रयान 3। अब पूरी दुनिया बोल रही है सबसे आगे है इंडिया के साइंटिस्ट, चाहे वो मर्द हो या स्त्री। दोस्तों, आज हमारे बीच में है इसरो स्पेस ट्यूटर डॉक्टर M.R.K MENON। ही इज अ पावर हाउस ऑफ नॉलेज, a pioneer and a leader in the field of aero modeling, model rocketry, drone technology, robotics, and space technology. He has trained more than 1 lakh students in India, in the Middle East, UAE, Bahrain, Nepal, Malaysia, and Nigeria. And to mention in his presence, he's also trained 200 teachers in STEM-based training methods. And Dr. Menon के परिचय में अधूरा रहेगा ये बताए बिना कि that he is the founder and secretary of the Model Rocketry Society. He is the advisor of the Aero-Club of India and Aero-Modelers Association of India, and is also the space ambassador for International Space Station Lab, which is situated in Florida, the United States of America. So, a very warm welcome, Dr. Menon, on this BizNation TV video podcast. कैसे हैं आप सर आप? थैंक यू दोस्त, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने बहुत तारीफ की। एज एज प्रोग्रेसेस यू एक्यूमुलेट लॉट ऑफ थिंग्स, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि यंगर जनरेशन मुझसे ज्यादा करे और मुझसे You being जल्दी too humble, sir. You ऊपर आ being too जाए। humble. आपने बहुत काम नहीं, किया है. So it is an honor to have you on this podcast today. थैंक यू वेरी मच। ये Okay. मैंने कभी पॉडकास्ट किया नहीं है दोस्त। दिस इज माय फर्स्ट वन। All right. So I hope it will be a nice experience for you as well. यस, इट्स अ So लर्निंग एक्सपीरियंस। यस, definitely, so definitely a lot to learn from you as well. So आज हम अपनी ऑडियंस से आपसे बात करेंगे या जानेंगे चंद्रयान 3 के बारे में, इंडिया के स्पेस मिशंस के बारे में, आपके एरो मॉड्यूलर स्पेस मिशंस के बारे में, एंड हाउ द यूथ ऑफ इंडिया जो कि क्लास 6 से लेके क्लास 12 के बच्चे हैं, हाउ कैन दे टेक अप देयर करियर्स इन एरोस्पेस और एरोस्पेस एजुकेशन। सबसे पहले एक्सीलेंट। डॉक्टर मैनन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये बताइए कि आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई टू बिकम एन aerospace educator. What brought you into the aerospace education? Because this is something very unusual and unfamiliar to hear. मैंने डॉक्टर, लॉयर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, यहाँ तक कॉमन लेमैन को समझ आ रहा है, मेरे को भी समझ आ रहा है, बट एरोस्पेस एजुकेटर, that is something unusual. So how? Please explain यस, that to us. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंड ये तो कुदरत का करिश्मा है या मेरा नसीब है, जो भी आप समझें। एक्चुअली आई ट्रेन्ड इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट. I lived in America all my life. For 21 years, I worked for 19 of the largest companies. In 2008, you'll remember the Wall Street collapse, all the banks and all collapsed. So I came back to India. And I was wondering what to do. मैं वापस नहीं जाना चाहिए था मुझे, क्योंकि वहां पर नौकरियां नहीं थी मेरे लेवल पे. There were no jobs available. I can't hear you, sir. Yes, yes, sir. Please go ahead. Okay. Okay. So what happened was I started doing some aero modeling classes in my mohalla, in my locality. And then I approached one leading school and they said, it's a great idea. Let's start. Then I got a second school, third school, fourth school, fifth school. So Monday to Saturday, like 6 schools I was working, and I was making a modest income. I was doing it more for fun, but there are Hmm. logistical expenses. So it was fine. Then I got a surprise call from the Naval Institute of Aeronautical Technology. They are based inside INS Vendurthi, that is a naval base in Cochin. That is the only college for aviation for Navy personnel. तो वहां पर क्यूसैट करके एक यूनिवर्सिटी है कोचिन में. दे गिव द डिग्री मास्टर्स इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग. But these officers, they're all young. They have done 10 years of service in the Navy. They already have a BTech degree. And they're getting a free M.Tech from the government of India. So 14 महीने में उनको एरोस्पेस में स्पेशलाइज करना पड़ता है. वहां पर क्यूसैट में कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता. They didn't have the lab and all that stuff, to the best of my knowledge. So they hired me. So my job was to design, build an aircraft and fly it with a video camera over the naval base at the height of 500 feet. And the students will clear their practical exam. That is how my entry into the teaching field came. And I enjoyed it so much that मैंने कहा अभी यूएसए का चक्कर छोड़ो यार, यहाँ पर हाँ बढ़िया हाँ. चक्कर चल रहा है और भी बड़ा होते जा रहे हैं यहाँ पर. So let's go into it. It's great fun and you're dealing with a younger generation. And I had a wonderful time because I grew up in a naval base. My father was a retired naval officer. So उनकी परछाइयों के अंदर मैं जी रहा था. He is no more. He was watching me from heaven. तो बहुत एक बहुत मैं हैप्पी था.
बिल्कुल। And then I met Dr. Kalam in 2011, I think, in one of the schools. And he told me, बेटे आप ये नाटक बंद कर दो, कॉलेज वॉलेज छोड़ दो आप, go and teach in schools. That is where people like you are needed. And that is how I started teaching in schools. And that's how my story began. Not, I didn't study aerospace engineering and all that. It was my hobby. I converted my knowledge because आजकल तो सारी किताबें मिलती हैं online, offline. I was lucky enough to be mentored by Dr. G. Madhavan Nair, ISRO chairman, 2008, सो the ये man अगर आपकी behind सर अभी Chandaryaan यू 1. स्टार्टेड इट एज एन हॉबी, अगर आप ये फुल टाइम कर रहे होते तो इट वुड हैव बीन अ वेरी वेरी बिग थिंग। एज एन हॉबी आपने यहाँ तक लिया है इस चीज को, तो इट वुड हैव बीन अ वेरी बिग थिंग। अब अभी भी मतलब कुछ छोटी अचीवमेंट्स नहीं, अभी भी इट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग व्हाट यू आर डूइंग, इट्स डूइंग सो मच व्हिच विल बी डिस्कसिंग राइट नाउ। Yes, you're absolutely right. I can be the next Byju's if I want to be. Like Byju's is teaching maths, physics, and chemistry and biology. और मैं उसी कॉइन के दूसरे हाफ में उसका एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ. So it's a great opportunity, but I have never looked at it as a business. To me, it's a last phase of my life. I want to enjoy it, and I'm doing that. I'm teaching in 6 countries now. I'm always traveling. September, मेरा चक्कर दोबारा start हो जाएगा. 25 days. I'm teaching and traveling. So मौज ही मौज है. You're dealing with teachers. You're dealing with students all over the world, different religions, different communities, different income levels. डिफरेंट सीबीएसई है, आईसीएसई है, इंटरनेशनल करिकुलम है, सब बच्चे ही तो हैं. सो इट्स ग्रेट राइट। फन टू बी अमंग दोस चिल्ड्रन. जी। तो इसमें सर जब जैसे हमारी पहले बात हुई थी, आपने मुझे बताया था दैट यू हैड एन ऑनर टू मीट द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया व्हिच वी कॉल द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सो हाउ वुड यू वांट टू टेल अस समथिंग अबाउट योर इंटरेक्शन विद हिम बैक इन द डेज? I would say, Udaiveer, if you look at your own life, you are much younger than me. I am now 66. मैंने जिंदगी में कभी भी एक लाइन ऐसा नहीं बोला जो एकदम नई चीज हो या कोई उसको सुनकर प्रभावित हो. मगर जो हमारे महापुरुष होते हैं वो मिनट बाय मिनट कुछ ना कुछ डायलॉग डालते हैं और वो अनोखा रहता है, एकदम न्यू रहता है, न्यू वे ऑफ थिंकिंग. द सेम वे माय इंटरेक्शन विद डॉक्टर कलाम वाज, आई वाज विथ हिम फॉर 4 hours. पहले 2-3 घंटे तो मैं डर के मारे बैठा था. मेरे 50 साल तो हो गए थे. आई वाज नॉट अ किड बट आई वाज स्कैर्ड, कि प्रेसिडेंट सर है, क्या बोलूं. एंड ही इज अ वेरी सीरियस पर्सन. व्हेन यू फर्स्ट मीट हिम, ही कम्स ऑन वेरी सीरियसली, इज इनटू हिमसेल्फ. एंड स्कूल का माहौल था, इज सराउंडेड बाय टीचर्स, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, हम्म। मॉनिटर्स वगैरह जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, सब रहते हैं रूम में. चाय का कप है, वड़ा है, सांभर है, और मैं उनके सामने बैठा हूँ. कैशू नट खा रहे हैं वो एक एक पीस. एंड बातचीत करना मुश्किल होता है. हाँ। Everybody is taking photographs and all that. But then once he got to know who I was, he taught me 2 great lessons. The first thing he told me was, India is not colleges. I want you to go to schools. और उस राइट। लेवल के आदमी जब कोई ऐसे विचार प्रस्तुत करते हैं तो मैंने उसको चैलेंज नहीं किया. मैंने कहा सर ये तो आपने कह दिया, मैं करने वाला हूँ, मैं कल से ही स्कूल में जाऊंगा. आई विल नॉट गो टू एनी अदर प्लेस. And he said something very, very important that later on in life, again, the Princess of Ajman told me. He told me, Menon, you're from US and this school is very lucky to have a teacher like you. और यहाँ पर सारे जो हैं रोबोटिक्स है, एरो मॉडलिंग है, रॉकेटरी है, मगर वो खिड़की के बाहर देखिए, वहां पर एक स्कूल है, शायद सरकार स्कूल है, वहां तो कुछ नहीं है. तो you have to promise to me that once a week you will go and take a class there. And he asked me who is the owner of this school, so I introduced the owner. एंड द ओनर ने शपथ ली कि हाँ मेनन साहब यहाँ आएंगे तो मैं एक एक 2 घंटे के लिए पास वाले स्कूल में भेजूंगा. So that is the right thing because we are scarce resources and every institution should say that ऐसे लोग आए या ऐसे ऐसे labs वगैरह बनाए जाते हैं बिल्कुल। तो that should be shared with the community. The same thing happened aerospace museum in the school, in an Indian school in Ajman. That is perhaps the first aerospace museum in a school anywhere in the world. And after I built it, we invited Sheikh Rashid, the ruler of Ajman, to inaugurate it. He was 80, 85 years old at that time. This happened 6, 7 years back. So he sent his daughter to inaugurate it. She has a master's degree in engineering from Wollongong University in Australia. And I could not see her face. She was completely in niqab. I could just see her eyes. And because she is a royal princess, I can't speak to her directly. I have to speak to the secretary. Suddenly, she turned around and said something in their language, in Arabic. And the secretary turned to me and said, the princess has a request कि आपने ये जो बनाया है बहुत बढ़िया बनाया है, and her father would be very, very happy to see हम्म। this. हम्म। Unfortunately, he's not keeping well, so I am here. But if you want to make my father really happy,
Open it to all the schools in Ajman. Let no Right. school be deprived of what you have created. This is marvelous. So that is the same Abdul Kalam sir sentiment that she's repeated. So I sincerely, in my travels, whenever I go and I do something in a school, I always say it is not enough to do something for your own school. Do it for Aju Baju ke schools maybe. So that is the brand I wish if people remember me, then I would say remember me for that, for carrying out that mission ki हमारे पास है अच्छी बात है मगर इसको बांट भी लेते हैं तो ये 100% मल्टीप्लाई हो जाएगा. जी। तो बिल्कुल वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जैसे मतलब आपने इतना काम किया, आपके काम को एप्रिसिएशन भी मिली। तो ऐसे ही मतलब मैं आपसे इसमें एक और चीज मैं आपके पास आना चाहूंगा एरोस्पेस एजुकेशन के बारे में। आपको क्या लगता है, जैसे हमारी करंट लीडरशिप है दैट इज बीइंग हेडेड बाय द मोदी गवर्नमेंट करंटली, सो अकॉर्डिंग टू यू हैज इट बीन फेवरेबल फॉर द एजुकेशन सेक्टर इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट स्पेस एजुकेशन? I would say that Modi Saab is definitely a very dynamic and pragmatic person. Now, I'm not involved in religion or politics, but I will answer your question very straight. In the last, I would say, 7 to 8 years or even 10 years, despite the failure of Chandrayaan 2, which is not a हम्म। failure actually, if Chandrayaan 2 had not failed, Chandrayaan 3 would never have happened. And that's a big story in itself. So I think ISRO is getting all the support it needs from the government, and more support will be forthcoming because now the race for getting into space is heating up. More countries are coming, small countries like UAE. उन्होंने ठान लिया, दुबई के प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि 2030 तक हमारे अरब के लोग चांद पे उतरेंगे और इंडियंस तो अभी चांद के बारे में बात भी नहीं कर रहे, हम तो अभी गाड़ियां उतार रहे हैं वहां पर, है ना. जी। बट definitely I'm sure under his fantastic leadership we will definitely see more funding coming in. 300 startups have come into the field of space technology. Hyderabad, Bangalore, Chennai, and they are all becoming centers for excellence for space technology. And a lot of big things are happening. I was just reading about some companies that are doing work in India. When you look at Chandrayaan 3 and you're only talking about ISRO, it's not really true. There are another 30, 40 companies that are working under ISRO to make our dream come true. चाहे वो कील बनाते हैं, नट बोल्ट बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ बनाते हैं, but it is a total change in the way ISRO was functioning. It is जी। now they're saying outsourcing, outsourcing. So it is definitely going to be a big boost for India. अभी प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास हाई क्वालिटी के एरोस्पेस कॉलेजेस नहीं है और उसकी काफी वजहें हैं और उसका जो मामला जो है उसको आई एम वेरी एक्टिवली एंगेज इन सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम आल्सो, ताकि our जी। students if they want to take up a program in very high level high quality aerospace education, that will be available in at least 2 cities to start with apart from government facilities. मैं IITs की बात नहीं कर रहा, मैं private colleges की बात नहीं कर रहा, वहां पर है aerospace, but I don't think they're really doing the cutting edge type of work that our children should be doing. ये मेरा अपना अंदाज है. ओके। तो सर जब आप कहते हैं दैट इंडिया इज इन दी स्पेस रेस, तो आप कैसे देखते हैं द कंप्लीशन ऑफ लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 मिशन? और जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सेड दैट इट इज एन अचीवमेंट फॉर द ह्यूमन मैनकाइंड, सो अकॉर्डिंग टू यू हाउ बिग ऑफ एन अकम्प्लिशमेंट इज इट एंड हाउ विल इंडिया नाउ बी सीन इन द स्पेस रेस ग्लोबली? I would say that at least I am very lucky that at my age I could see the moon landing in 1969, and then in 2023 I saw our Vikram lander landing on the moon's south pole. It has been attempted only by 4 or 5 countries and only 3 have succeeded. So we are the only people who have landed on the south pole. From an engineering standpoint, it's a tremendous thing because just 4 years back we crashed. And in 2009, the orbiter, it stopped communicating, it vanished. It's still there, they've located it. But the moon impact probe hit the moon, so that is an accomplishment. The world, you might have seen the Times of New York cartoon that is floating around. एक कमरे में कुछ गोरे लोग बैठे हैं और इंडियंस बाहर देख रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है, और वो कार्टून अब पलट गया है कि अंग्रेज लोग बाहर हैं और इंडियंस अंदर हैं और हम मून के बारे में. इट्स अ ब्यूटीफुल कार्टून. आई मीन New York Times is a great magazine. I don't think they're meant to be offensive. कभी-कभी cartoons offensive हो जाते हैं, अपने ख्याल पर रहता है वो. I just took it as a joke, and it was valid at that point of time. And very interestingly, today I saw a video about somebody from Pakistan talking about Pakistan's space program, which is much before India. They started in the late 1959, 1960. They started their space program, and they launched 100+ rockets with the help of the Americans.
अभी ओके। वो 65 में वॉर आ गया, 71 में वॉर आ गया, एंड वहां पर ऊपर नीचे हो रहा है पॉलिटिक्स में, दे वेंट इनटू न्यूक्लियर एंड ऑल दैट, सो स्पेस रह गया पीछे। बट हाँ। इंडिया हैज नाउ इन द लास्ट 10 इयर्स मेड अप। अगर हम सोए पड़े तो अब जाग गए हैं, अब तो पूरी दुनिया को जगा देंगे हम, बिकॉज हम्म। द नेक्स्ट मिशन इज ऑन September 3rd. That is the one that is going closest to the sun. I क्लोज mean, टू सन, राइट। Aditya, and then we'll have Mangalyaan 2 coming after that. Then we are going to have Gaganyaan coming after that. I don't know what else they have planned. So I'm telling you, from number 5 position in the listing, we have easily now number 4 or even number 3. We don't have International Space Station. We don't have an astronaut in space. ये दो बातें हो जाएं, वो इसी साल में हो जाएगा या अगले साल में हो जाएगा. Then India will be number 2, number 3. सो इट इज मैसिव एंड डायनेमिक, और ये अब इट विल, ये बढ़ता ही जाएगा, देयर इज नथिंग ये तो स्टॉपिंग बढ़ता अस नाउ। जाएगा, एब्सोल्युटली बढ़ता ही जाएगा ये तो. Right. So, something regarding your background, sir. Sir, tell us something about your role as an ISRO space tutor. You see, NASA is one of the world's leading innovators in the field of space. But very few people know that they are also a treasure house of knowledge. And that knowledge, through their website and through many programs like Citizen Scientists and NASA Sally Ride Camp, they're offering it free to school students and college students all over the world. ISRO traditionally did not have that educational aspect. Abhi last 2-3 years they have started this directorate, Capacity Building and Public Outreach, that is headed by Dr. K. Sudhir, the director. He's sitting there and hangama kar diya unhone. Itne sare projects roll out ho rahe hain. They got like 8 or 9 buses floating around all over India, which is a traveling museum. ISRO is donating museums to government schools and government colleges. I am heading a project where ISRO is starting a space innovation center. So a lot of things are happening in ISRO. They are offering online programs. तो ये अभी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बिल्कुल। बढ़ता जाएगा. And tremendously, 1.5 million schools in India will be impacted. ऑलराइट। सो Now, your question, yeah. जी, अब अभी अगर जो भी आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनके बारे में कुछ शेयर करना चाहें, व्हाट आर योर करंट प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन? Right. I would like to begin by congratulating ISRO, not for the moon landing. वो तो है, सर आंखों पर है वो सब. The fact is they have gone heavily into field of education. They want to build the next breed of young men and young women, like you said, like women, to come into that straight line so that they can go to BTech, MTech, PhD, and then join ISRO or private companies. So congratulations, ISRO, for that. And as part of that, they started creating ISRO Space Tutors. Tutor means somebody who teaches. Teaches, right. वो medical colleges की terminology है tutor. There's a post in a medical college called tutor. Basically, my job is to use my knowledge and my connections to travel all over India and take space technology into the school, free of cost wherever possible. But okay, ISRO Space Tutors are basically private companies that are in the field of space or space education. I am a one-man show and I have a small company. And my company's chief advisor is Dr. G. Madhavan Nair, ISRO chairman of 2008. मेरा मकसद कुछ और था, but now it has received a catalytic boost by the space tutor program. जो कुछ मैं उनके लिए कर रहा हूँ वो अभी schools की बात नहीं. I'm now doing a project for them in the college. It is going to be India's first space innovation lab and center as part of a engineering university. 7,000 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं. वो प्रोजेक्ट 7,000 अप्रूव बच्चे? हो गए. 7,000 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर. Okay. And 4,000 are staying on campus. मैं वो यूनिवर्सिटी का नाम नहीं Wow. बता सकता आपको क्योंकि हाँ MOU साइन हो चुका है and we हाँ are in the final phase. That will be the first lab set inside an engineering university wow, to select 100 students and train them in all aspects of space technology. So they are that's giving us the absolutely money. tremendous. Just look at Wow, it. that's Yeah, they yeah. are giving us the money. So that is a proud thing that I got a chance to associate with that. I learned about it and I raised my hand, sir, मैं हूँ, जिंदा हूँ, मैं करूँगा ये आपके लिए. तो एक इंटरव्यू प्रोसेस रहा, मेरे को प्रेजेंटेशन देना पड़ा, उनकी टीम आई थी वहां से. They like the prospects and I'll share my PPT with you. I have no problem. But just keep it to yourself. You can see जो कुछ मैं कह रहा हूँ सच है या नहीं, आप देख सकते हैं उसमें. It is a tremendous thing. अगर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल इंडिया में ऐसे 5-6 कॉलेजेस सेलेक्ट हो जाएं, not IITs, वो तो गवर्नमेंट फंडिंग से ऑलरेडी चल रहा है, but some other colleges where people can easily get to. And right. they have tied up for rocket launch. They have already tied up with Chandipur facility और श्रीहरिकोटा. अपॉर्चुनिटीज बहुत आ जाएंगी बच्चों के पास. बहुत, हाँ बहुत.
और बच्चे तो, जब मैंने प्रोग्राम किया, अभी 1 महीना हुआ है प्रोग्राम हुए, बच्चे तो पागल हो गए थे. दे कुड हम्म। नॉट बिलीव दैट दे आर गेटिंग अ बीटेक एंड दे आर गेटिंग एक्सपोजर इन वर्किंग इन अ लैब सेट बाय इसरो. और हम्म। मेरा काम है वो लैब मैनेज करना, सेटअप करना और उसको मैनेज करना, ताकि जब बच्चे पास आउट हो जाएं, दे गो आउट विद एन एक्स्ट्रा किक इन देयर सर्टिफिकेट एब्सोल्युटली। सेइंग, हाँ। हाँ मैंने बीटेक तो ले लिया है, मगर क्या है, मैंने इसरो के लैब में काम किया है, प्रैक्टिकल इसरो के नॉलेज भी है। साइंटिस्ट से तालीम प्राप्त की है, और इसरो के छोटे छोटे प्रोजेक्ट हमने किए हैं. क्या मालूम, चंद्रयान 4 में इन्हीं बच्चों का कोई योगदान भी हो सकता है. राइट। सो इट्स अ तो फैंटास्टिक थिंग. जी, तो इसमें सर जैसे मैंने आई हैड रेड एंड यू हैड आल्सो शेयर्ड समथिंग दैट हाउ ट्रू इज दैट यू आर आल्सो प्लानिंग टू लॉन्च और यू विल बी लॉन्चिंग अ स्टूडेंट रॉकेट टू स्पेस, व्हाट इज दैट अबाउट? It is my salam to my world, this world where I'm living. When I time to go comes, you want to do something spectacular. In 2018, the University of Southern California, United States, the students there, they built a rocket called Traveler 4. उनको 18 साल लगे वो रॉकेट बनाने में, बिकॉज 4 साल के बाद ग्रेजुएट करके चले आते हैं, नई टीम आ 18 जाती है, साल तो लगे? 18 साल लगे फ्रॉम द ओके। कॉन्सेप्ट ऑफ द आइडिया टू फाइनली हैविंग अ सक्सेसफुल रॉकेट. ओके। तो मेरा एक स्टूडेंट है, अभी वो 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में है, उसने 2 साल पहले ये आइडिया मेरे को दिया, सर आप क्यों नहीं करते ये. तो मैंने कहा यार, ये बच्चा मुझसे चैलेंज कर रहा है, ये तो मेरे को ठान लेना, करना है मुझे ये. हम्म। बातचीत की और मैं मेरे एक दोस्त से मिला, वो अभी यूक्रेन से रीसेटल होकर इंडिया में आया है. ही इज अ प्रोफेसर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडियन है. हम्म। उसका पूरा वहाँ सब कुछ लुट गया, वहां पर पूरी हम्म। यूनिवर्सिटी उन्होंने जला दी रशियंस ने. तो बंदा रॉकेट के बारे में बहुत जानता है, मेरे नॉलेज से 100 गुना ज्यादा जानता है. तो हाई ऑल्टीट्यूड रॉकेट्स मैं बनाता हूँ, रॉकेट 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाता मैं, मगर वो तो बनाता है 100 150 400 किलोमीटर तक जाता है. एंड ही हैज गॉट न्यू टेक्नोलॉजी. सो वी हैव डिसाइडेड that in this facility that I just talked to you about, the ISRO people have already seen it. They have seen our rocket that can go up to 60 kilometers. Dr. दैट्स ग्रेट। Somnath, ISRO chairman, yes, he's already seen the rocket. It was on display in Bangalore last year at the space exhibition. Now, a larger version of it that will reach 150 kilometers, तैयार हो रहा है, and ओके। we need a budget of 3.5 crores. So that will come from the public. It is not going to be funded by ISRO. So उसके पैसे के चक्कर में हम फंसे हुए हैं, बाकी और कोई टेक्नोलॉजी का चक्कर नहीं है इसमें. और ये बच्चे बिल्कुल। बनाएंगे, ये 100 बच्चे हमने जो इंडियंस के सेलेक्ट किए पास हैं ना. वैसे ही सर नॉलेज की कमी है ही नहीं है। Exactly, exactly. जी। So I'm trying to get some international collaborations also, and I'm sure that Reliance and Tatas and Adanis and all those people, कुछ ना कुछ तो मैं हनुमान जाऊंगा, कुछ तो कुछ मिलेगा हमें, डेफिनेटली। बिकॉज वो भारत की शान है कि बच्चों ने बनाया है. विशिंग विशिंग यू ऑल द बेस्ट इन दैट, और जब वो चीज होती है विल प्ले दिस क्लिप अगेन कि यहाँ पे Yes, वी वर yes, डिस्कसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और वो हो चुका है। yes, absolutely, absolutely. I'm very सो happy that. Yeah. डेफिनेटली सर। सो आप जैसे हमने डिस्कस किया दैट यू आर प्लानिंग टू लॉन्च अ स्टूडेंट रॉकेट टू स्पेस and you're an ISRO space tutor, you have knowledge about STEM education, and so vast knowledge regarding the aerospace education. So according to your perspective, according to your knowledge, according to your experience, how do you see, or how bright is the future for the school kids to take up their careers in the aerospace, and how can a young student get involved in rocketry space while he or she is still at school? If you can just give a detailed description about it, if a parent or if an interested student is watching this, अगर उनको इससे कुछ नॉलेज मिल सके आपके थ्रू, तो वो क्या रहेगी इसके बारे में? First and foremost, Udaiveer sir, you can give my name and number. Students or parents can contact me. My services are absolutely free of cost. मैं जय हिंद आदमी हूँ, so there is no money involved in anything. Point number one. Point number two is Model Rocketry Society, the one that I created 10 years back. It is the only one recognized by Government of India. वो कोविड की वजह से और फंडिंग की वजह से वो मैं उसको बड़ा करके बना नहीं पाया, मगर अभी हम्म। मेरे पास वो रिसोर्सेज आ रहे हैं, बंदे आ रहे हैं. तो रॉकेटरी सोसाइटी का नेशनल कंपटीशन वी आर प्लानिंग इन सितंबर अक्टूबर. तो पूरे इंडिया में जितने स्कूल्स हैं, दे विल बी एबल टू पार्टिसिपेट. Thirdly, as a hobby, rocketry kits are available on Amazon. Rocketry kits are available from so many small companies, so children can engage in that. The only problem is that aero-modeling is very safe, rocketry is very unsafe. So unless a parent is actively involved or a teacher is actively involved, a child should not be encouraged to take up rocketry, because that can create a lot of damage, a lot of problems. So ideally speaking, I do a lot of programs online for various organizations.
And I found that in the age group 6th standard to 11th standard, the interest level for space technology is very, very high. And it's equal between boys and girls. It's Right. not just boys, it's boys and girls. And the kind of questions they ask, it's never a one-sided conversation. They're always asking questions, always asking questions. What we don't have is hand holding. That is what I am trying to do, sir. मैं hand hold करता हूँ. I don't just say something. I say, you know what? ये मेरा आता पता है. Reach out. I'll hold your hand. मैं बच्चे को उस मुकाम तक पहुंचा दूंगा. अगर इंडिया में रहना है, इंडिया में करो. बाहर जाना है, बाहर भी भेज सकता हूँ मैं आपको. There are a lot of wonderful programs. And one of the things that my dream, apart from launching a rocket into space, is to build world's largest aerospace theme park. इसकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है. 50 एकड़ जमीन में 100 करोड़ का ये एक म्यूजियम बनेगा जहां पर 24 घंटे एक्टिव रहेगा. इट्स लाइक डिज्नीलैंड बट फोकसेस ऑन एरोस्पेस. आप समझ लीजिए सर कि एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो साइज रहता है वो एक फुटबॉल फील्ड के जितना होता है. पूरा उस साइज का मैं बना रहा हूँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, फुल्ली एयर कंडीशन. वो फ्लोट करेगा. और जब 6th 7th 8th के बच्चे दोनों साइड से आएंगे, रशियन साइड और अमेरिकन साइड से आएंगे, तो उसके अंदर it will be lot of foreign students have volunteered to help me. They are ready to come to India for 3 weeks or 6 weeks to teach our Indian children everything that they are doing. Mostly biology. Most of the experiments are in the field of biology. कर रहा हूँ, मेरे को पता कुछ नहीं है अभी what exactly the plan is, पर जैसे आप डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, मैं वहां पे घूम के आ चुका हूँ उस एरिया में जहां आपने बताया. राइट. तो यही तो चीज है. अगर कुछ करना है तो बड़ा सोचो. मैंने जिंदगी छोटे छोटे चीजों में बर्बाद कर दिया. मैंने कहा यार लास्ट लैप में हूँ रिले रेस में, अभी बैटन को लेके भागने का, जिताने का इंडिया को, तो मैं पुश कर रहा हूँ अपने आप को. लोग मुझे पागल समझते हैं, मेरी बीवी समझती है ये पागल है, बच्चे समझते हैं ये पागल है. मगर अब मैं उस मुकाम पर आ रहा हूँ कि अभी मैं इसरो के सामने जब मैंने ये आइडिया रखा तो तालियां बजी जी कि वो भी हैरान है कि ये प्राइवेट सिटीजन कैसे सोच सकता है ये सब. हाँ. अभी स्पेस शटल बना रहे हैं. स्पेस शटल में 6th स्टैंडर्ड का बच्चा कॉकपिट में बैठ के ऑपरेट करेगा और उसमें से आर्म निकलेगा, बे डोर्स खुलेंगी, कार्गो बे, उसमें से रोबोटिक आर्म निकलेगा, सैटेलाइट आएगा, उसको पकड़ के खींच के फोल्ड करके अंदर लाएगा, बंद करेगा. 6th स्टैंडर्ड का बच्चा है. 150 किलोमीटर का रॉकेट लॉन्च करेगा. 6th स्टैंडर्ड का बच्चा है. वाह. आई पर्सनली फील दैट आवर चिल्ड्रन आर रियली स्मार्ट. उनको बस चांस दीजिए. And I'm not talking about branded schools. I'm talking about schools like APJ Kalam sir said. Village schools हैं, वो इंग्लिश नहीं जानता है, हिंदी भी ठीक से नहीं जानता है, मगर उसको चांस दिया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है. बिल्कुल. So we want to hold national level competitions in drone technology, in aero modeling, in space technology, rocketry, robotics, national level पर, ताकि हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करें और ये 21st century skills जो यूनाइटेड नेशंस न्यू एजुकेशन पॉलिसी सब बात कर रहे हैं कि they should learn creativity, they should learn collaboration, they should learn communication skills. ये जो अच्छे अच्छे skills हैं 21st century ग्लोबल सिटीजन बनने के लिए जो skills चाहिए, बच्चों को आज दीजिए. आज अभी जब कॉलेज तक पहुंच जाते हैं बिगड़ जाते हैं बच्चे. It's too late. That is what कलाम सर said. पकड़ो जब when they are really interested. कॉलेज जब आ जाते हैं ना, बुरी आदतें लग जाती हैं और फोकस भूल जाते हैं. 4 साल घिसना है, बाप दादे का पैसा है, कोई पूछने वाला नहीं है, लिखो लिखो ना लिखो ना लिखो, कोई ना कोई एक्सक्यूज तो दे सकते हैं कि क्यों बीटेक नहीं किया हमने. और ये हाल है बीटेक का ना. यू नो व्हाट इज हैपनिंग. सीरियस प्रॉब्लम्स वी आर हैविंग एट द बीटेक लेवल. तो आईआईटी वाले तो पढ़ के चले आते हैं बाहर. कोई वापस तो आता नहीं है. बिल्कुल. अब ये इसरो के लोगों को देखो, कोई आईआईटी वाला नहीं है उसमें, सब ऑर्डिनरी कॉलेजेस के हैं. तो आपने यू हैव हेल्ड ऑन द राइट नर्व कि जहां से आपको पता है कि यहाँ से लोग निकलेंगे, यहाँ से स्टूडेंट्स निकलेंगे. राइट. I have nothing against IIT. I mean, I'm just giving you a statement, that they can do more, they should do more. There's no lack of funding. IIT वालों ने ऐसा रॉकेट क्यों नहीं बनाया कि वो पहुंचे ऊपर? ऐसा सैटेलाइट क्यों नहीं बनाया कि वो 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाके कुछ करे? ऐसा प्लेन क्यों नहीं बनाया कि they can say we designed and we built a plane? Wright brothers ने 1903 में प्लेन बनाया बिना कैलकुलेटर के, बिना all the instruments. तो why we are not thinking like that? सब टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक को वॉमिट कर जाते हैं, बीटेक एमटेक पता नहीं पीएचडी तक पहुंच जाते हैं. तो I hope that that system will change and that system is changing. System, sir. System will not change. You are changing system. You are
रेवोल्यूशन, जो आप बातें आपकी मैं सुन रहा हूँ इतनी ध्यान से, मेरे को मतलब सुन के भी ऐसा लग रहा है कि ये भी चीज है, हमें तो इसके बारे में पता भी नहीं, जो चीजें आप सोच के एग्जीक्यूट करने लेवल तक पहुंचे हुए हैं। तो बहुत चीजें मैं सीखने को भी मिली आज। I am not an engineer. I'm a postgraduate in management science. All my experiences in the field of, I would say, finance, the world of finance and the world of operations. I became a teacher only in 2008. अभी 15 साल से मैं टीचिंग में लगा हूँ। मेरी आवाज़ चली जाती है, दिन के शाम को मेरी आवाज़ चली जाती है। मगर मुझे मुझे लग रहा है कि दिस इज ऑल डेस्टिनी, और मैं अपने आप में बहुत संतुष्ट हूँ। आदमी के जिंदगी में हजारों गम रहते हैं, मेरे जी। जिंदगी में भी हैं, हर आदमी के जिंदगी में कुछ रहता है। मगर व्हेन आई थिंक अबाउट व्हाट इज अवेटिंग मी टुमारो इन दैट स्कूल, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, टीचर्स मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे को सामान लेके जाने का है, रॉकेट उड़ाने का है, प्लेन बनाने का है, मेरे सारे दुख दर्द जो हैं मैं भुला सकता हूँ। And it is taking me in the right orbit, in the right track. I'm very, very lucky that recently I met another ISRO person. His name is Dr. P. Radhakrishnan. I want everybody to learn about this gentleman. He and Madhavan Nair sir are the same age, the same batch. Madhavan Nair sir retired as 2008 chairman, and Dr. P. Radhakrishnan retired as, he was assistant director of the Liquid Propulsion Lab, which is one of the main things of ISRO in Trivandrum. But what people don't know is in 1985, he was the first Indian scientist chosen by NASA for हाँ 11 months training in United States, in NASA, in different locations, to go in the space shuttle to the International Space Station. 11 महीने के ट्रेनिंग के बाद, when he was waiting to get the seat on the next flight, that space shuttle in 1985, the Challenger, it exploded 76 seconds after takeoff. तो ठीक। 2-3 साल के लिए फिर नासा ने फ्लाइट नहीं किया, तो बेचारे वापस आ गए, और उन्होंने एक जबरदस्त किताब लिखी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आउट ऑफ प्रिंट है। ये किताब अगर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट या नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट पढ़ ले ना एक बार, ये he can say that he has master's degree in aerospace वील या अटैच space लिंक, technology। अगर आपके पास ई बुक हुआ तो इसका मुझे लिंक देना पॉडकास्ट ये के नीचे। इस- ये अभी मैंने ये पब्लिशर है यूनिवर्सिटी प्रेस लिमिटेड। मैंने ओके। उनसे बातचीत की, मगर उन्होंने मेरे को कॉल वापस तक नहीं किया। एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट बुक। और ये जो मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 बीटेक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ एरोस्पेस में, ये यहाँ पर कंपलसरी रीडिंग है। और ये अभी मेरे गुरुनाथ जी का भी बुक निकला है अभी। इट जी सेज रॉकेटिंग थ्रू द स्काईज, दिस इज जी माधवन नायर, सो दिस इज ऑल्सो कंपलसरी रीडिंग। एंड देन देयर इज अनदर बुक ऑन इसरो रिटन बाय फ्रॉम स्पेस टू सी। ये एक जबरदस्त एनालिसिस है, डिफरेंट टाइप का है। तो व्हेन यू रीड ऑल दिस, देन यू आर जी। सेइंग, what a fabulous company this is, नवरत्न कंपनी, क्या उससे भी ऊपर कुछ है तो इनको दीजिए। And they are such humble ordinary people. And I was Madhavan Nair said, made a statement 3 days back after Chandrayaan 3 that Indian salaries in ISRO are 1/5 of what they are making outside India. But our people are happy, a sense of accomplishment है। वो तो हाँ नासा में भी है, ऐसी बात नहीं है कि नासा वाले को accomplishment नहीं है। But that's a very advanced country, they're in a position to pay, they've got huge budgets. But I जी। think the wind will change. Things will happen. A lot of private companies are coming. I believe in Bangalore, I counted 50 space companies in Bangalore alone. So दैट्स the ग्रेट। future for India is fantastic. And number of ancillary companies that will come up. अब जैसे बोइंग एयरक्राफ्ट बनाती है सियाटल वॉशिंगटन में, उसके 3,000 पार्ट्स 3,000 कंपनी से आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इंडिया में उसका डोर बनता है, कौन विश्वास करता है कि बोइंग का डोर इंडिया हैदराबाद में बनता है? So same way, critical components for ISRO is coming from now maybe 30 suppliers, it may become 300 suppliers. In each supplier will have 50 to 100 vacancies. So next करेक्ट। 5 years, maybe we are going to get 1,000 aircraft between Tata and Indigo. So we need 4,000 pilots. Just imagine, it is just getting out of hand actually. इतने सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं कि आप to go from Delhi city to Gurgaon you can take a flight. So India is going to open up, definitely बहुत going to open up. बहुत बहुत अच्छा लगा लगा सर, आज आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ये मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ व्हेनेवर दिस पॉडकास्ट इज कमिंग एज सून एज पॉसिबल, तो लोगों को भी इतने ही इंटरेस्ट से आपकी बातों का सुनने का मौका मिलेगा और आपसे मिलने का मौका। इट विल बी एन ऑनर टू मीट यू ऑन द इवेंट एज वेल एज वी राइटफुली नो यू विल बी कमिंग देयर, तो आपसे तब भी और जरूर चीजें आएंगे। सीखने को मिलेंगी। Definitely. I just want to say that
I am not an expert on anything, but it's just the fact that for 15 years I've been teaching. That's all the expertise I have. बाकी मैं ड्रीम करता हूँ कि ये लेवल पर इंडिया पहुंचे, हमारे स्कूल्स पहुंचे, कॉलेजेस पहुंचे. STEM is my doctorate is in STEM with aerospace as a specialty, and I make a lot of great things that go out to the schools. You know, books, STEM के books लिखे हैं मैंने. ये सब मिलता नहीं है. So this book, in fact, it's 92 इसकी सर pages जो in भी color. आपके पास ई बुक्स होंगी ना, यू कैन शेयर द Yeah, लिंक, आवर I'll टीम give विल it to जस्ट you. अटैच इट, जो भी हमने पॉडकास्ट किया ना, सो दैट यू आर Yeah, शेयरिंग इट फॉर द रेफरेंस टू एनीवन रिगार्डिंग अ वर्क. हम उसके नीचे इसकी ई कॉपीज लगा सकते हैं फॉर द sure, रेफरेंस. sure. ई बुक्स होंगी इनकी That तो. the book on STEM is it's a mind-boggling book. किसी ने ऐसा किताब लिखा नहीं है, and I'm offering it free of cost to any teacher, anybody who's interested. Because अच्छे टीचर्स बनेंगे तो अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे, बिल्कुल अच्छे बिल्कुल. स्टूडेंट्स मिलेंगे, हमारी फ्यूचर गारंटीड है. शांति रहेगी, अमन रहेगी, कोई हम पर आंख नहीं लगाएगा ना. सो एक 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 क्या बोलते हैं उसको, रोलर बॉल इफेक्ट है, डोमिनो इफेक्ट है उसमें. So that is I want to thank you. Thanks a lot for your award. Thanks a lot for inviting me to this podcast. My wife would be very happy सुन करके एक podcast में मैं भी आ रहा हूँ. वो विश्वास नहीं करती है कि यार पता नहीं क्या पॉडकास्ट क्या बोल रहा है ये, शाम को भी सूट पहन के बैठा हुआ है यहाँ पर. नहीं, थैंक यू So सो मच टू यू सर फॉर ज्वाइनिंग. आई लर्नड अ लॉट, और उम्मीद करते हैं विल डू सच कॉन्वर्सेशन अगेन इन द फ्यूचर, मोस्ट प्रॉब्ली please sir. फिजिकली. Yeah. नहीं, अब तो राइट. सितंबर तो करीब करीब ही है, जी जी जी. तो ओके, जरूर थैंक यू. मिलेंगे. If I can be of any help to your organization, you can bet I will always be there. And डेफिनेटली. I do it with all humility and happiness कि मैं कुछ while I am around कुछ तो मैं कर सकूं आपके लिए, या फिर आपके टीम के लिए, या फिर अपनी बिरादरी के लिए, है ना.